उनके चाचा नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनके कमेमोरेट करते हुए। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे 12 नवंबर को। The day is celebrated to commemorate the first and the only visit of father of nation Mahatma Gandhi to the studio of All India Radio, Delhi, 1947. On 12th November 1947, Mahatma Gandhi addressed the displaced people, a refugee from Pakistan who had temporarily settled in Kurukshetra in Haryana after partition. The day was declared as Public Service Broadcasting Day or Jan Prasaran Divas in 2000. After it was conceptualized by Suhas Borkar, convener Jan Prasar. तो इतना बस ये इसका छोटा सा एक बैकग्राउंड है। उसके बाद बात करते हैं नेशनल एजुकेशन डे, दैट इज 11 नवंबर, 11 नवंबर को मनाया जाता है, और बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आजाद, द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, और 11th September 2010, Ministry of Human Resource Development has announced the commemoration of birth of a great person by recalling the contribution of Maulana Abul Kalam Azad in the field of education. ये गिने चुने कुछ एक दिन थे, नेशनल लेवल पर ये सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो इसीलिए ये थोड़े इम्पोर्टेंट कंसिडर किए। उसके बाद हम बात करते हैं बुक्स एंड ऑथर्स की। Book Bangladesh Liberation at the rate 50 years Bijoy with Synergy, India Pakistan War 1977 by MM Narwane, जो जर्नल है, इन्होंने ये एक तरह से आप कह सकते हो कंपाइलेशन है। जनरल MM Narwane released a book Bangladesh Liberation at the rate 50 years Bijoy with Synergy, India Pakistan War 1971, a compilation of personal account of war by veterans from India and Pakistan. जो war veterans हैं उनके जो खुद के जो experiences हैं वो इस book के अंदर रखे गए हैं। The book is the amalgamation of historical and anecdotal account of 1971 war and comprises author from both India and Bangladesh, mostly who fought the war, जिन्होंने वो जंग लड़ी थी। उसके बाद event was organized by Center for Land Warfare Studies at the India International Center. The award ceremony was also conducted. The Scholar Warrior Award was awarded to the former Chief of Army Staff of Bangladesh, Bir Protik, to Brigadier Narendra Kumar for his outstanding contribution as warrior in the field and in the field of research. उसके बाद बान की मून, शायद इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये जनरल सेक्रेटरी थे यूनाइटेड नेशंस के। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी रिलीज की, रिजॉल्व द यूनाइटेड नेशन इन द डिवाइडेड वर्ल्ड, द रिजॉल्व यूनाइट, हाँ और थोड़ा सा देख, हाँ, ही सर्व्ड एज द 8th जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस फॉर ए 2 5-year terms 2007 to 2016। 2 बार ये रहे यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल। उसके बाद इसमें इस बुक में एक छोटा सा इसका क्या डिटेल है वो देख लेते हैं। रिजॉल्व यूनाइटेड नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड, पब्लिश्ड बाय हार्पर कॉलिंस इंडिया, बैन गोज ऑन टू डिस्क्राइब हाउ ही बिकेम ए मैन ऑफ पीस and from a child of war. Former United Nations General Secretary Ban Ki-moon's first diplomatic posting was in India. He developed such a special connection and that even 50 years later he tells the Indian people that half of his heart belongs to their country. उसके बाद book Cooking to Save Your Life by Abhijit Banerjee, जो नोबेल प्राइज विनर है। आपने शायद अगर 1-1.5 महीने पहले का जो एक सप्लीमेंट आया था इंडियन एक्सप्रेस में, आई के नाम से एक सप्लीमेंट आता है, पढ़ते हैं आप लोगों से? Am I audible? हसिता, गरिमा, yes sir, yes sir. नेहल, हाँ, द आई के नाम से सप्लीमेंट आता है ना इंडियन एक्सप्रेस, लेते हैं आप लोग इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर? yes sir.
हाँ सर देखा हाँ नहीं था, मतलब अरे ध्यान नहीं है सर वो। अरे दाई के नाम से शायद अच्छा हाँ हाँ। हर हफ्ते आता है ना, सप्लीमेंट आता है इंडियन यस सर। एक्सप्रेस के साथ। उसमें ये बुक का पूरा डिटेल दिया था अभिजीत बनर्जी साहब की, द कुकिंग टू सेव योर लाइफ के नाम से। इन्होंने काफी अच्छी रेसिपी उसमें लिखी भी है। तो मतलब कह सकते हैं कि जो मेन स्ट्रीम इनका जो प्रोफेशन है, या ये कहिए कि जो कंट्रीब्यूशन है, उसके अलावा भी उनके अपने कुछ एक इंटरेस्ट एरियाज होते हैं ऐसे लोगों के, तो उन्होंने उसके ऊपर एक कुकिंग के ऊपर एक बुक लिखी है। तो हालांकि इनको जो नोबेल प्राइज मिला था वो एलिविएटिंग ग्लोबल पॉवर्टी के ऊपर इन नोबेल प्राइज मिला था। वाइस प्रेसिडेंट रिलीज द बुक ऑफ श्रीमा धर्मयम श्री श्रीमाधर्मयम, yes, in Hyderabad. It has been written by Sasi Kiranacharya. Sasi Kiranacharya. It is about the leadership and good governance and the rule of Lord Rama. Not that much important. Novel लाल सालाम, a novel authored by स्मृति ईरानी. इन्होंने भी एक किताब लिख दी है. Is set to release her first novel titled Lal Salam, a novel on November 2021 में. Novel is inspired by the killing of 76 Central Reserve Police Force personnel during the Maoist attack. Okay, internal सिक्योरिटी से रिलेटेड है. उसके बाद द डिसरप्टर, हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह सुक इंडिया बाय देवाशीष मुखर्जी. पता है इनके बारे में कुछ? विश्वनाथ प्रताप सिंह का के बारे में, जो प्राइम मिनिस्टर रहे थे काफी उस टाइम पर, थोड़ा बहुत कुछ पिछले 25-30 साल की हिस्ट्री का थोड़ा बहुत कुछ आइडिया है? मंडल कमीशन का नाम सुना है? yes मंडल कमीशन जो है इन्हीं के टाइम पर आया था फॉर रिजर्वेशन. रिजर्वेशन तो खैर बहुत पहले से था कंट्री के अंदर, बट उसकी जो परसेंटेज थी उसको एनहांस कर दिया काफी ज्यादा. और बेसिकली विश्वनाथ प्रताप सिंह का मानना ये था कि वो रिजर्वेशन के मुद्दे पर होने वाली पॉलिटिक्स को खत्म करना चाहते थे. अनफॉर्चुनेटली दिस कुड नॉट हैपन, वो हो नहीं सका. लेकिन यही इनका एजेंडा था. तो द डिसरप्टर के नाम से ये एक बुक आई है देवाशीष मुखर्जी साहब की. डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार रिलीज्ड अ बुक टाइटल फोर्स इन स्टेटक्राफ्ट. इंडिया डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार, ये इन जनरल जो सेक्रेटरीज होते हैं ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं. ये तो इनका अपना सेट ऑफ एक्सपीरियंस होता है. कुछ किताबें लिख देते हैं. जैसे आपको एक बहुत ही अच्छी किताब में आपको बताता हूँ. जगमोहन साहब का नाम सुना है आप लोगों ने? अगर मौका मिले तो कभी उनकी कश्मीर के ऊपर एक लिखी हुई किताब है जिसका नाम है द फ्रोजन कश्मीर, है ना. तो वो भी काफी मतलब वर्थ रीडिंग इनके एक्सपीरियंसेस होते हैं. तो ये एक बुक लिखी है फोर्स इन स्टेटक्राफ्ट इन न्यू दिल्ली. The book is a compilation of essays on topics such as counter-insurgency operations, conflict in Northeast, air power, nuclear posture, and contribution by all stalwarts of the armed forces who have vast operational experience and understanding in several cornerstones of the force and its application. उसके बाद एक बुक आई है नवंबर मंथ में, दैट इज अनसैकलिंग इंडिया बाय अजय छिब्बर एंड सलमान अनीस सोज. द अनसैकलिंग इंडिया, हार्ड ट्रूथ्स एंड क्लियर चॉइसेस फॉर इकोनॉमिक रिवाइवल. किताब लिखी है अनिल छिब्बर ने एंड सलमान अनीस सोज ने. बुक एग्जामिन करती है whether India can use next 25 years when it will reach the 100th year of independence, not only to restructure its economy but to rejuvenate its democratic energy and uncycle its potential to become genuinely developed economy by 2047. उसके बाद एक बुक आई है नेहरू, नवंबर मंथ में, नेहरू द डिबेट दैट डिफाइंड इंडिया बाय त्रिपुर दमन सिंह एंड अदिल हुसैन.
इन्होंने the book serves the revisionist exploration of India's first and longest serving Prime Minister Jawaharlal Nehru and investigates the overlooked role of his contemporaries and opponents in shaping his political vision. उसके बाद एक बुक है an economist at home and abroad, a personal journey by Shankar Acharya, noted economist and chief economic advisor of the government of India. उन्होंने ये किताब लिखी है. And the book features the professional and personal life of the most complicated policy economist Dr. Shankar Acharya. उसके बाद next book is The Cinema of Satyajit Ray, authored by Bhaskar Chattopadhyay. Cinema of Satyajit Ray, written by author Bhaskar Chattopadhyay and published by Westland, details the life of legendary Indian filmmakers Satyajit Ray, filmmaker Satyajit Ray. Bhaskar Chattopadhyay also authored novels like Patang 2016, Here Falls the Shadow 2017 and The Disappearance of the Sally Sequeria 2018. ये कुछ इनकी दूसरी किताबें भी हैं, तो ये बस याद रखिएगा थोड़ा. उसके बाद नॉट जस्ट क्रिकेट, रिपोर्टर्स जर्नी बाय प्रदीप मैगजीन. ये बुक का टाइटल है और ऑथर है प्रदीप मैगजीन. is going to be released in December 2021. It consists of life experience, social, political ups and downs, and of the Indian cricket by journalist Pradip Maxin. He is the author of the book Not Quite Cricket, which exposed the match fixing scandals. तो इस तरह से ये एक बुक है, छोटा सा एक डिटेल है. उसके बाद हम बात करते हैं बुक द सेज विद टू हॉर्न्स, Unusual Tales from Mythology, written authored by Sudha Murthy, the chairperson of Infosys Foundation and a renowned author. Sudha Murthy has published her new book titled The Sage with Two Horns, Unusual Tales from Mythology, and the fifth and the last book of the Unusual Tales from Mythology series. तो इन्होंने ये इनकी एक सीरीज है, सीरीज का नाम है अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी, और उस सीरीज की जो लास्ट बुक है वो है द सेज विद टू हॉर्न्स, अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी. द सीरीज फीचर्स द स्टोरीज ऑफ किंग्स एंड क्वींस, गॉड्स एंड गॉडेसेस, सेजेस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन ऑफ विजडम. उसके बाद नेक्स्ट बुक इज द जॉन लैंग, वांडरर ऑफ हिंदुस्तान, Slanderer of Hindustani, lawyer for Rani, authored by Amit Ranjan. इन्होंने बुक लिखी है. बेसिकली इस बुक के अंदर क्या है, द बुक इज अबाउट जॉन लैंग्स लाइफ, हिज एक्सप्लॉइट्स एंड द लिटरेरी वर्क. ही वाज एन ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट एंड लॉयर who settled in India in 19th century. He fought many cases against the British and also represented Rani Lakshmibai in her battle against the annexion of her kingdom of Jhansi by East India Company. तो इस तरह से ये कुछ एक इम्पोर्टेंट बुक्स हैं मंथ ऑफ नवंबर की. उसके बाद बात करते हैं, देखते हैं इकोनॉमी, बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर क्या है. Reserve Bank impose 1 crore penalty for SBI for violating norms. कौन सा norm violate किया है? SBI held shares in borrower companies of amount exceeding 30% of the paid up share capital of those companies. ये violation है subsection 2 of the section 19 of the Banking Regulation Act. जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन, न्यूज़पेपर के जो बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड इकोनॉमी का जो पेज है उसमें से आप ये न्यूज मानिए. Hinduja's planning to raise stake in IndusInd Bank to 26% by after RBI hike cap on promoters holding. Reserve Bank of India has formed an internal working group in June 2020 to review the extent of guidelines of ownership and corporate structure of Indian private sector banks. IWG has 5 members with Sri Mohan Yadav as convener. Purpose क्या है इसका?
sorry, आगे कैसे गया? The initial lock-in requirement will continue as the minimum of 40% of paid up voting equity share capital of the bank for the first 5 years. The cap promoter's stake in long run of the 15 years has been raised from 15% to 26% of the paid up voting equity share capital of the bank. तो आप कह सकते हैं कि जो इंडसइंड बैंक है उसमें हिंदुजा ब्रदर्स का या हिंदुजा ग्रुप का भी स्टेक है और वो 15% से बढ़ा के 26% कर दिया गया है। उसके बाद एचडीएफसी बैंक टू टैप इनटू इक्विटास एसएफबी इक्विटास स्मॉल फाइनेंशियल बैंक कस्टमर बेस विद को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। इतना ही याद रखिएगा इसमें, बस समझ लीजिएगा। बाकी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है इस तरह के क्वेश्चन से और इस तरह के क्वेश्चंस के आने की। बैंक ऑफ बड़ौदा कार्ड पार्टनर्स एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फॉर रुपे क्रेडिट कार्ड्स। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए एनपीसीआई के साथ पार्टनरशिप किया है। इंडियाज इकोनॉमी लाइकली टू ग्रो 7.7 to 7.5% in financial year 2023 EAC PM इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर ने ये एस्टिमेशन या ये कहीं प्रोजेक्शन दिया है। ये तो सेम ही है। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी लाइक टू सॉरी ये रिपीट हो गया, इसको मैं एलिमिनेट कर दूंगा, पिछली बार करना चाहता था शायद भूल गया मैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। मेरी आवाज पहुंच रही है ना आप लोगों तक? ऑडिबल में? आई एम ऑडिबल प्रॉपर्ली है ना? यस सर। देखिए एसबीआई रिसर्च हैज रिवाइज्ड अपवर्ड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन। तो एसबीआई की एक रिसर्च रिपोर्ट आती है, उसका एक नाम भी है, वो नाम बताएंगे क्या है? इसमें लिखा हुआ भी है सर इकोरैप। इकोरैप है ना? इकोरैप ने वो रिसर्च हैज रिवाइज्ड अपवर्ड इंडिया जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन। तो जीडीपी जो है हमारे उसके बढ़ने के को प्रोजेक्ट किया है। ईपीएफओ पे में पार्क 5% एनुअल डिपॉजिट इन इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अल्टरनेटिव फंड्स। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ एम्प्लॉइज जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड दैट up to 5% of annual deposit can be invested in alternative investment funds including infrastructure investment funds। तो जो पैसा ईपीएफओ में जमा होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जमा होता है, उस पैसे में से 5% पैसा सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जो है वो इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में भी लगा सकते हैं। दिस इन्वेस्टमेंट विल ऑफर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ईपीएफओस बास्केट। इससे जो ईपीएफओ में जो पैसा जमा होता है वो एक तरह से इन बाकी के फंड्स में पैसा लगाने से रिस्क को आप कह सकते हैं कि डाइवर्सिफाई करने का एक ये प्रोसेस है। उसके बाद फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एंड ऑडिट कमेटी हैव बीन टास्क्ड टू डिसाइड अपॉन द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। उसके बाद नेक्स्ट बैंकिंग फाइनेंस में न्यूज, आरबीआई ऑथराइज्ड आरबीएल बैंक टू कलेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस। सबसे पहला कौन सा बैंक था जिसको ये डायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए ऑथराइजेशन मिला था? याद है? अक्टूबर मंथ में मैंने बताया था सर कोटक महिंद्रा। कोटक महिंद्रा बैंक, यस। हाँ है ना। आरबीआई कॉल्स फॉर पब्लिक कमेंट ऑन डिजिटल लैंडिंग। आरबीआई ने डिजिटल लैंडिंग के लिए पब्लिक के कमेंट को इनवाइट किया है। कुछ एक इस तरह के उधार देने वाली एजेंसीज हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, मोबाइल एप्स के थ्रू वो जो है उधार लेने और देने का काम करती हैं। तो उसके प्रति पब्लिक उसके अगेंस्ट पब्लिक कमेंट जो है वो आरबीआई ने इनवाइट किया है। उसके बाद एसबीआई साइंस पैक्ट विद जमशेदपुर एफसी फुटबॉल क्लब बिकम स्पॉन्सर। जमशेदपुर फुटबॉल क्लब को स्पॉन्सरशिप दी है एसबीआई ने और एक पैक्ट साइन किया है। जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वाज सेट अप इन झारखंड बाय टाटा स्टील्स
to conduct Indian Super League and promote sports of football in India. The two brands will also actively engage with fans via first team and during the broadcast of the Indian Super League. The interaction with the fans will continue on a digital platform of SBI and JFC as well. तो उसके बाद कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक बैक्स एसोचैम अवार्ड. आत्मनिर्भर भारत के केस में कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को एसोचैम अवार्ड मिला है. The World Bank and Asian Development Bank launches a We Power India Partnership Forum. We Power India Partnership Forum has been held through virtual platform on November 9, 2021 to boost South Asia Women in Power Sector Professional Network in India. We Power. South Asia Women in Power Sector Professional Network. The event was organized by World Bank and Asian Development Bank in association with India Smart Grid Forum. ये एक छोटा सा पीस ऑफ न्यूज है. उसके बाद पेटीएम मनी लॉन्चेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वॉइस ट्रेडिंग. Paytm Money, wholly owned subsidiary of Paytm, has launched voice trading powered by artificial intelligence. It will allow users to place a trade or get information about stock via single voice command. This voice command features uses neural networks and natural language processing (NLP) to allow instant processing. Natural language processing is the part of machine language. Thereafter, machine learning. Second, the service has been launched in line with the Paytm Money's efforts to offer the next-gen and AI-driven tech to elevate user experience (UX). ये हम बता ही चुके हैं, रिपीटेशन है. उसके बाद RBI unveils internal ombudsman mechanism for select NBFCs. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरनल ombudsman mechanism इंट्रोड्यूस किया है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए. These two types of NBFC, there are two types of NBFCs: the deposit taking NBFCs D with 10 or more branches, and non-deposit taking NBFCs ND with asset size of 5,000 crore and above, having public customer interface. Consequently, the two categories of NBFCs will have to appoint internal ombudsman. The internal ombudsman will be responsible for handling the public grievances at entity level before the grievances escalated to ombudsman at RBI. हाँ जी, ombudsman का मतलब तो जानते होंगे आप, क्या होता है? बताएंगे मुझे ombudsman? सर ये एक मैकेनिज्म होता है कंप्लेंट रिट्रेजल का बैंक में. आरबीआई के द्वारा अपॉइंट किया जाता है. हम 38 डेज बाद वहां पे जा सकते हैं. बिल्कुल. अभी जैसे बात चल रही थी, अभी कोई 3 मुद्दे उठाए गए थे आज से 5-7 साल पहले केजरीवाल साहब ने. तो क्या बोलते हैं उसको नियुक्त करने के लिए ओम्बड्समैन को हिंदी में क्या बोलते हैं? थोड़ा सा हिंदी बता दीजिए. महान्यायवादी. ध्यान रखिए. उसके बाद HDFC बैंक लॉन्चेस द सेकंड एडिशन ऑफ मुंह बंद रखो कैंपेन टू रेज अवेयरनेस ऑन फ्रॉड प्रिवेंशन. Thereafter, RBI projects CPI inflation, consumer price index inflation, at 5.3% for 2021-2022. Bharat Pay launched world's first merchant shareholding program for its merchant partners. भारत पे ने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम अपने मर्चेंट पार्टनर्स के लिए शुरू किया है. तो
तो मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी मर्चेंट फाइनेंशियल सर्विसेज से भारत पे से जुड़ेंगे तो कुछ 1% उनको स्टेक जो है वो भारत पे के ओवरऑल स्टेक के अंदर, ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर दिया जाएगा। जैसे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होता है, जैसे किसी एक कंपनी में कोई अगर एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो उस एम्प्लॉय को अपार्ट फ्रॉम पे एंड पर्स कुछ एक स्टॉक और कुछ एक शेयर जो है वो कंपनी प्रोवाइड करती है। ऐसा कुछ एक बड़ी कंपनीज में ऐसा रेगुलेशन है, मतलब प्रोविजन है, नॉट रेगुलेशन। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस की। समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस में देखते हैं COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 ग्लासगो क्लाइमेट समिट हेल्ड इन स्कॉटलैंड। नरेंद्र मोदी साहब ने नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070 के लिए कहा है, और उन्होंने 5 पॉइंट प्लान पंचमित्र के नाम से टू फाइट द डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज की बात कही है। इसके बाद बात करते हैं श्री हरदीप एस पुरी chaired the valedictory session of 14th edition of Urban Mobility India UMI Conference 2021. He presented award to the state and city winners of the excellence in urban transport in different categories and distributed certificate under the executive program in sustainable transport and trophies of the smart move. Thereafter, third edition of Goa Maritime Conclave इंडियन नेवी ने ऑर्गेनाइज किया November 7 to November 9 एट नेवल वॉर कॉलेज गोवा, और इसका जो थीम था GMC गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव का, द मैरीटाइम सिक्योरिटी इमर्जिंग नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स, ए केस फॉर प्रोएक्टिव रोल इन फॉर IOR नेवीज। Chief of the Staff General Bipin Rawat will inaugurate 14th edition of C010 annual hacking and cyber security briefing. ये वर्चुअली November 10 से November 13 के बीच में हेल्ड हुई in association with Kerala Police, with two not-profit organizations, Society for Policing of Cyberspace and Information Security Association Research. Information Security Research Association. C010 is an improvise, adapt and overcome. ये थीम है इस 14th एडिशन में से लगातार होने वाली कॉन्फ्रेंस है, अगर ये 14th एडिशन है तो। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड 82nd ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस. The first conference was held in Simla in 1921. AIPOC is being held in Simla for the 7th time. All India Presiding Officers Conference is celebrated. Is celebrating its 100 years in 2021. In this conference, various issues discussed, such as the responsibility of presiding officer towards Constitution, House, and the people. Thereafter, Prime Minister Narendra Modi has delivered keynote address at the Sydney Dialogue via video conferencing. India's technology evolution and revolution, November 17 to 19, by Australian Strategic Policy Institute. Thereafter, Union Home Minister Amit Shah is chairing Southern Zonal Council meeting at Tirupati in Chittor, district of Andhra Pradesh. इसका थीम इसमें नहीं लिखा हुआ है बेसिकली, बहुत इंपॉर्टेंट है भी नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट फर्स्ट ग्लोबल इनोवेशन समिट और
of pharmaceutical sector. Chemical and fertilizer minister Dr. Mansukh Mandavia will also be present on the occasion. It will highlight the opportunities of Indian pharma industry that has huge growth potential. उसके बाद बात करते हैं India reaffirm its strong commitment to strengthening Indian Ocean Rim Association IORA in 21st Annual Council of Ministers meeting. ये भी important बहुत रेगुलर होने वाली मीटिंग है. अगर ये जिस तरह से 21st एनुअल काउंसिल बोली गई है तो पर्पस क्या है? द लार्जेस्ट इन द प्रीमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन ओशन रीजन is promoting peace, security and prosperity in region as well as the wider Indo-Pacific. IORA COM was held in hybrid format in Dhaka. उसके बाद बात करते हैं Confederation of Indian Industry CII will organize the flagship event Connect 2021 from November 26 to 27 in Chennai, Tamil Nadu. Connect is an international conference and exhibition on information and communication technology ICT. Theme of the conference is building a sustainable deep technology ecosystem. Am I audible? उसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट virtually inaugurated. The event has been organized at the Indian Institute of Technology Delhi सर campus. स्क्रीन शेयर नहीं है. हाँ जी, स्क्रीन Screen. शेयर नहीं है. स्क्रीन तो शेयर किया था हमने. अभी देखिए. नहीं हुआ सर. एक मिनट. अब बताइए. So you have to unlock your video. हाँ, अब बताइए. अभी शेयर हुआ नहीं हुआ? No, sir. No, sir. हमारे एंड से तो ये शेयर दिखा रहा है. एक मिनट. इंटरनेट स्लो होगा ना. अब तुम जाओ. अब तुम जाओ. नहीं है अभी नहीं. बेटा चुप रहो. कुछ फर्क पड़ा? कुछ दिखा? हेलो, ऑडिबल? Yes, sir. But अभी screen visible नहीं है. वो ऐसे लिखा हुआ है कि has started screen sharing, but अभी screen visible नहीं है. At least to me.
एक मिनट रुकिए, फिर मैं कनेक्शन दोबारा से रीसेट करता हूँ। बस थोड़ा सा, बस 30-40 सेकंड का पेशेंस रखिए प्लीज, है ना। ओके सर। अब बताइए, एम आई ऑडिबल? मेरी यस आवाज जा रही सर। है आप लोगों को? अब यस डॉक्यूमेंट विजिबल हुआ? नो सर। अभी भी नहीं हुआ? नहीं। कमाल की बात है, आवाज पहुंच रही है, डॉक्यूमेंट शेयर नहीं हो रहा। अब बताइए। नो सर। अरे ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, सब कुछ तो ठीक है, आवाज आ रही है, क्यों नहीं दिख रहा डॉक्यूमेंट? अच्छा बड़ा दिख रहा था। सर आपकी आवाज भी थोड़ी कट रही है। अच्छा, एक मिनट रुकिए। हाँ, देखिए गड़बड़ क्या हो रही है कि जियो वालों ने हमारा डेटा जो है वो सिर्फ आपकी इस क्लास भर में ही खत्म कर दिया। अब हमारे इसमें नेट पैक खत्म हो गया है, अब हम आपकी क्लास कंटिन्यू करेंगे कल, और कल हम नवंबर दिसंबर दोनों रिन्यू करेंगे, ठीक है ना। ओके सर। हमारा भी एग्जॉस्ट हो गया है ये, बहुत ओके जल्दी सर। एग्जॉस्ट हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। ठीक है, हो सकता है कि अभी हम बात करें, बात हो पाए। तो कंटिन्यू करते हैं फिर, ठीक है ना। ओके सर। ठीक है, ओके, ठीक है गरिमा, ठीक है वरुण, Thank you, sir. थैंक यू सर। हाँ, ठीक है, ओके।